Well, Prime Minister Narendra Modi has outlined his smart police vision addressing country's top cops in the DGP conference in Guwahati. The Prime Minister talked of his smart police dreams. He in fact laid out that the police should be strict and sensitive, modern and mobile, alert, accountable, reliable and responsible, along with being tech savvy and being trained at the same time. पुलिस वेलफेयर, मैं जानता हूं सबसे ज्यादा तनाव मुक्त, अगर तनाव भरी जिंदगी किसी की है तो पुलिस बेड़े की है। वो अपने जीवन को दांव पे लगाता है। अगर उसके परिवार में सुख और संतोष, शांति नहीं होगा तो वो ड्यूटी नहीं कर पाएगा। वो कितना ही त्यागी, तपस्वी, बलिदानी अफसर होगा तो भी परिवार की बेचैनी उसको बेचैन बनाती है। ये सरकार का और हम सबका दायित्व है कि हम पुलिस परिवार के वेलफेयर के लिए कोई सिस्टमैटिक व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं क्या। जैसे उनका परिवार के सबका मेडिकल चेकअप कैसे हो, इंक्लूडिंग पुलिस के लोग, उनकी बच्चों की शिक्षा दीक्षा के संबंध में क्या हो, ज्यादातर नीचे तबके के जो पुलिस के जवान हैं उनकी रहने की सुविधाएं कैसी हैं, उस पर हम कोई ध्यान दे सकते हैं क्या। ऐसा नहीं है कि सब होता नहीं है। हमारे लिए एक अच्छा है कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे और सफल मुख्यमंत्री रहे, और इसलिए उनको इन विषयों की बहुत बारीकी का ज्ञान है और उनका मार्गदर्शन आने वाले दिनों में हमें बहुत काम आने वाला है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा, तो होम डिपार्टमेंट अपने पास होने के कारण उसकी बारीकियों से मैं परिचित हूं। धरती पर क्या चल रहा है उससे मैं जानकार हूं, और इस कारण संभावना है कि हमारी ये प्रायोरिटीज है। हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस वेलफेयर के काम को हम वैज्ञानिक तरीके से विकसित करें, और मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो आप देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कभी कभार हम पुलिस के लोगों का मुश्किल क्या होता है जी, सामान्य मानवी के दिमाग में, आप हिंदुस्तान की मूवी ने पता नहीं पुलिस को ऐसा पेंट करके रखा हुआ है। मैंने अभी बहुत कम ऐसी मूवी देखी कि जहां पुलिस के त्याग और तपस्या की कोई कथा आई हो, और उसके कारण जनमानस पर ऐसी छवि बन गई है। हमने स्पेशली एफर्ट्स करने चाहिए। भारत सरकार ने कोई पीआर एजेंसी कर करके ये सारे फिल्म प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग। अगर हम समाज की रक्षा करने वाली इतनी बड़ी शक्ति का सम्मान और गौरव नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी बुराइयां भी कम नहीं होगी। हम परिवार में भी एक बच्चा गलती करता है तो बार बार गलती दोहरा करके उसको ठीक नहीं करते हैं, उसकी गलती ध्यान में रखते हैं, लेकिन अच्छाइयों की ओर ले जाते हैं तो अच्छा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। कमियां होगी, किसमें नहीं है, लेकिन कमियों को दूर करने का रास्ता भी तो होता है, और वो समाज के सहयोग के बिना संभव नहीं होता है। और मैं चाहता हूं कि एक लंबी दूरी की सोच के साथ भारत के पुलिस के संबंध में लोगों की सोच बदली जा सकती है, और धरती की हकीकत के द्वारा उसको किया जा सकता है। कभी कभार क्या होता है, पुलिस से जुड़ी हुई एक नेगेटिव खबर इतने दिनों तक मीडिया में छाई रहती है, लेकिन उसी कालखंड में सैकड़ों अच्छी चीजें हुई होती हैं
वो कभी भी उजागर नहीं होती है। Right, joining me over the right now is my colleague Maushmi Singh reporting from Guwahati. Maushmi, the Prime Minister very clearly stressing upon, being foresighted and especially laying more stress on the reforms that he wishes to see in terms of the police force, where it is and where he wants it to be. That's right, Sana. Clearly, the Prime Minister steering away from the discussion on terrorism. He did not address that issue or speak about the internal security matters. Rather than that, he was more interested in boosting the morale of the men in uniform. Right. We'll connect with Maushmi in just a bit, but clearly, as Maushmi was pointing out, the Prime Minister, what one was expecting that he will bring, lay stress on issues like the terror threat that the country is facing from the ISIS, or be it the internal security threat as well. But the Prime Minister steered clear from that. He let the Home Minister do all the talking on that front. And today it was just about boosting the morale of the police forces. Remember, the DGs and IGs of all the states present at that two-day conference. The second day today, the Prime Minister talked about making a smart police force. He stressed on the several qualities that he wishes to see in the police force in the days to come, also suggesting some ways in which the police can better its services to the nation. Well, to put it in perspective, when the Prime Minister talked about a smart police force, he said the police force should be strict but sensitive, modern but mobile, alert and accountable, reliable and responsive. And with all of that, the police force should be tech savvy and well trained. Now, he also suggested that while he was the Chief Minister in Gujarat, he'd followed the same model, suggesting to the other states as well that they should have a website, each state of the police forces. Maushmi, my colleague, is back on the line with me. Maushmi, yes, we were talking about how the Prime Minister stayed away from talking on what we were expecting him to speak about, and just this address was all about boosting the morale of the forces. That's right, Sana. Prime Minister likes to walk the line that he draws, and clearly he did stay away from the topic of terrorism and other matters of internal security, which were addressed by the Home Minister, and he focused more on boosting the morale of the forces and talking about how brave Indian police men have sacrificed their lives and they have not been acknowledged. He also spoke about how the police should focus on promoting its good work so that the mindset and the stereotype of the men in uniform can change, and the mindset of the people of the country can change, and the police can be more sensitive and more upbeat with the current scenario. He did talk about smart police policy, saying that the police has to be smart, giving each and every letter in that word a meaning, clearly trying to speak to the policemen directly, along with the Prime Minister. The Home Minister was also there, and we had the 7 CMs of the Northeast state who were there. So he did push the Northeast agenda also, saying that, clearly indicating that it was his idea to keep this conference in the Northeast, in Guwahati, so that it could be like a brainstorming session where you would leave the routine work and come here and discuss matters of internal security, and also it will serve as boosting the morale of the Northeast region. That's right. Maushmi, thanks so much for joining us with the latest.